Assalamu alaikum and welcome. We're discussing the Fairy Queen, short summary and then MCQs on it. So Fairy Queen is by Spencer. तो हम इसको Spencer को he was writing an allegorical work in shape of an epic poetry. और ये बहुत ज़बरदस्त epic poetry थी अपने time की. He introduced his Spenserian Stanza as well. So this is a story about a difference between evil and virtue. और उनकी एक war है. और उनकी war में कौन successful होता है, कौन नहीं, ये दिखाया गया है इनमें कि बातिल powerful है, लेकिन by the end or in the end, it is good that prevails. So इसमें ये जो जंग है नेकी और बदी की, इसमें he is talking about a knight in book 1. So this basically a knight जिसका काम क्या है कि his name is Redcrosse. तो फेरी क्वीन उसे हुक्म देती है कि वो लेडी यूना who is the female protagonist, उसके वालिदैन को छुड़ाना है उसने, जो कि एक ड्रैगन की कैद में. So Lady Yuna and Redcrosse, they are on their mission, and when they're moving, when they're going further, they see a cave. So the cave here that belongs to Arrow, and she's such a monster, जिसका आधा जिस्म औरत का है, and the lower part of body that is like a huge python, एक बड़े से सांप की तरह. So Redcrosse fights her and defeats her and kills her. So जब आगे बढ़ते हैं दोनों, so they come to see some magician. He is like a Archimago. So Archimago is the magician जिससे उनका मुकाबला होता है. Now Redcrosse he creates certain spell, and Redcrosse starts believing that the lady is not chaste. So वो उससे अलग हो जाता है, and Redcrosse continues his journey alone. और वहाँ पे एक pagan knight से उसकी मुलाकात होती है, जो कि जिसके साथ एक खूबसूरत सी औरत होती है जिसका नाम डुइजा होता है. So जो knight है is Sansfoy, and the lady with him is Duiza. So she asked Sansfoy to fight with Redcrosse. So afterwards, this Sansfoy he dies, and Duiza is now able कि वो Redcrosse का उसका दिल जीत लेती है, क्योंकि लेडी यूना से वो थोड़ा सा disillusioned हो जाता है because of that magic thing. So अब आगे जाके Redcrosse को दो दरख्त नजर आते हैं, जिनको दरख्त की फॉर्म जो है वो ड्यूइजा देती है because she is a witch, और अपने जादू से बेसिकली ये जो दोनों ट्रीज से ये एक लड़का लड़की थे जो आपस में प्यार करते थे, बट they were converted in trees by Duiza. So दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो लेडी यूना है, जब वो Redcrosse को सर्च कर रही है, तो she comes across Loin, जो कि उसका दोस्त बन जाता है, साथी बन जाता है, और आगे जाने पे उसे को नाइट मिलता है सैंसलॉय, जो कि शेर को मार देता है और लेडी यूना को कैद कर लेता है. So Duiza Redcrosse को ल्यूसीफेरा के महल में लेके जाती है, जो कि गुरूर की अलामत है, प्राइड. लाइक वी कैन मेक इट फ्रॉम द वर्ड लूसीफर, जो कि प्राइड की वजह से मरा, और ये भी ल्यूसीफेरा जो कि प्राइड की अलामत है. So वहाँ पे what happens is कि जो जो शेर के मरने के बाद she is upset, और वहाँ पे Redcrosse he comes and he tries to fight with the knight, the pagan knight, and he eventually kills him, जो कि वहाँ पे उसको कैद करके बैठा होता है उस लेडी को. तो फिर उसको अब सैटिर्स और फॉन्स होते हैं जिनकी कैद में लेडी यूना होती है, और इट इज़ अ टाइम कि उस पे अटैक होने वाला होता है उस नाइट का, तो उसमें वो इंटरवीन करता है और उसे मार देते हैं, जीत जाते हैं ये लोग. So Redcrosse now moves further, तो वहाँ पे उसकी he happens to come across a giant. So he is named
Argoglio. So Argoglio is a monster, a giant, जिससे उसकी टक्कर होती है. तो वो उसको एक Mr. Redcrosse, the knight, is thrown in a cave. So when Lady Una comes to know something about knights, so she requests King Arthur, who's been very famous in legends. So उस King Arthur, Prince Arthur, उससे request करती है कि to set the knight free. So Prince Arthur उसे फेरी क्वीन की से अपनी मोहब्बत के बारे में बताता है. तो Prince Arthur, Redcrosse is but he is willing to save him basically. So he goes और उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है. उसको सेव करने के बाद जब वो उसको उस कैद से निजात दिला देता है, उस जाइंट और गोगलियो को मार देता है. So afterwards नाइट का जो एक मेन मिशन है वो अभी तक अधूरा होता है कि he has to face the dragon and जो यूना है उसके पेरेंट्स को आजाद करवाना. So after 3 days they keep fighting for 3 days और उसके बाद finally he is able to Redcrosse is able to kill the python that जो अज़दहा होता है उसे मारने में कामयाब हो जाता है और लेडी यूना की जो वालिदैन है वो आज़ाद हो जाते हैं. So by the end of book 1 उनकी आपस में मंगनी हो जाती है. So this is basically a creative tale जिसमें नेकी और बदी and the whole of the book is or whole of the story is working on this thing कि in the end जो नेकी है ये prevail करती है और जो बदी है वो जितनी भी powerful हो वो खत्म हो जाती है. So the Fairy Queen is an English epic poem by Edmund Spencer. Spencer ने लिखी ये और एक epic poem थी. Spencer in this poem invented the verse form known as Spenserian Stanza, जो कि बाद में Spenserian School of Thought ने follow किया. On a literal level, the poem follows several knights as a mean to examine different virtues. किसमें देखा गया कि मुख्तलिफ लोगों की नेचर कैसी है, कुछ लोग अच्छाई की तरफ हैं, कुछ बुराई की तरफ हैं. So एक examination भी है इसमें virtues का. The text is primarily an allegorical work. So this is allegorical work, allegory इसमें यूज की गई. It can be read on several levels of allegory, including as praise or later criticism of Queen Elizabeth I. So Queen Elizabeth I के हवाले से allegorical poem है, जो कि start में praise थी और बाद में as a criticism भी यूज की गई. Spencer presented the first 3 books of Fairy Queen to Elizabeth. Elizabeth I so it was presented to her in 1589. The poem was a clear effort to gain court favor. So ये मदद चाहता था, favor चाहता था court से, so इसलिए ये praise लिखी गई. As a reward, Queen Elizabeth granted Spencer a pension for life amounting to £50 a year, जो कि उस जमाने में काफी था. सारी उम्र इसको £50 मिलेंगे. The poem consists of 6 books. 6 books हैं इस poem की. In this epic is divided on 6 books, which are further divided into several cantos. So, Seductress of Night is Acrasia, जो एक character है जो कि knights को seduce करती है. She is Acrasia. A knight who is the embodiment and champion of justice is Artigal. The protagonist is no doubt Redcrosse. What has the dragon done to Una? So he has taken her parents hostage. Who takes up Una's quest? So it is Redcrosse, जो कि उसकी quest को अपनाता है, उसके लिए जाता है लड़ने. Whose den does Una want Redcrosse to avoid? So it is Auror's den, जो कि वो monster है, so उससे वो warn करती है कि वहां न जाना. How does Redcrosse defeat Auror? So he strangles her, उसका गला दबा के मारता है. The hermit who shelters Redcrosse and Una is really whom? So it is Archimago, who is portraying to be a hermit. What animal befriends Una? So it is basically a lion
Who is the mistress of the house of pride? So that is Lucifera. Who hears Una's cries for help in forest? So these are Fauns and Satyrs. Satyrs वो होते हैं जो कि like animals type human being, mythological creatures हैं. Who protects Una from Sansloy? So this is Satyrane जो कि protect करता है उसको. In whose dungeon is Redcrosse imprisoned? So he is imprisoned in Orgoglio's dungeon. उसके जिंदान में कैद होता है. How does Prince Arthur kill Orgoglio? He dismembers him. Like उसको काट देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है. What weapon does Redcrosse use to slay the dragon? So he uses his spear. What virtue does Sargon represent? So he represents temperance. So temperance is like being very like sober or sophisticated in nature. Who is Goyon's guide? So it is a palmer. Who is his guide? Who steal Goyon's horse? So that is Braggadocio. Who tempts Goyon with riches and his own daughter? It is Mammon who does so. Who prevents the theft of Goyon's possessions? That is Arthur. What does Arthur read in Alma's castle? So that is a chronicle of British kings. So this was a short summary and some MCQs from the Fairie Queen.